Okay, so basically we have whatever the brand is, the OCTs which are available in the market, the light source of all the OCTs will be the same. So that is SLD. All OCTs have the same light source, which is an SLD, superluminescent diode, having the characteristic of wavelength, variable wavelength starting from 800 nanometer to 1500 nanometer. So depending upon the technology, different brands choose different wavelengths. For example, Topcon Swept Source, they are using the wavelength of 1050 nanometer. Like Optopol, it is using 830 nanometer. So it depends, but the light source is the same, which is superluminescent diode SLD. जितनी भी OCTs बनी है, जितनी भी, and then further we classify it as time domain OCTs and Fourier domain OCTs, and this I will tell you in detail in the next slide. So जितनी भी OCTs बनी हैं, जितनी भी दुनिया में बनी है, उनका लाइट सोर्स सेम है, सेम लाइट सोर्स है, वो टॉपकॉन है, नाइडेक है, जाइस है, हाइडलबर्ग है, and that light source is SLD, superluminescent diode. इसमें करेक्टरिस्टिक, इसकी क्वालिटी, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये 800 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है और 1500 नैनोमीटर तक जाती है, और कंपनीज उसमें से चूज़ कर लेती हैं अपनी टेक्नोलॉजी, जो भी वो आगे एक्वायर करना चाहती हैं उसके मुताबिक. जैसे स्वेप्ट सोर्स है 1050 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज़ कर रही है, ऑप्टोपोल 830 नैनोमीटर यूज़ कर रही है, सो इस तरह चल रहा है. तो लाइट सोर्स सेम है. आगे फिर फर्दर क्लासीफाई होती है, उसको डिवाइड किया जाता है कि क्या ये टाइम डोमेन OCT है या फोरियर डोमेन OCT. ओके, टाइम डोमेन OCT. टाइम डोमेन फैमिली में जो OCTs आती हैं वो है TD OCT, टाइम डोमेन OCT, और एंटीरियर सेगमेंट OCT, AS OCT. अब ये टाइम डोमेन टेक्नोलॉजी, दिस इज द ओल्ड टेक्नोलॉजी, and has been obsoleted now. In this technology, the working principle of this OCT was that it measured time, the time of transmitting the signal and receiving back. The total time taken by that signal was interpreted by the processor, and then it gives the image. The resolution of time domain family was very poor, due to which this technology has been replaced by Fourier domain technology. And in Fourier domain technology,
the the spectrum, the light, the signal which transmits from the HLD and then it receives back. So the actual signal versus the signal which we receive is being interpreted by the processor, and then we get the image. So in this we read the signal, whereas in time domain we calculate the time. So in Fourier domain, the resolution of the OCT image is much better as compared to time domain. And in Fourier domain, we have spectral Fourier domain OCT, we have swept source OCT, and anterior segment OCT. जो टाइम डोमेन फैमिली है, इसमें ये ऑब्सलीट हो गई है टेक्नोलॉजी. इसमें होता ये था कि जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते थे और रिसीव करते थे, उसका टोटल टाइम मेजर करते थे. तो टोटल टाइम मेजर करके हम उसको इंटरप्रेट करके सिग्नल को हम आउटपुट पे देते थे. इसमें इसकी रेजोल्यूशन बहुत पुअर होती थी, जिसकी वजह से फोरियर डोमेन आई. इसमें बीम ऑफ स्पेक्ट्रम जो है, एक स्पेक्ट्रम जो है वो एमिट किया जाता है, फिर रिसीव किया जाता है, और फिर उसको इंटरप्रेट करके और फिर आउटपुट पे सिग्नल दिया जाता है. और इसकी रेजोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू टाइम डोमेन बहुत बेहतर है. और इस टाइम डोमेन फैमिली में टाइम डोमेन ओसीटी आती थी और एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी आती थी, जो कि अब टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट होगी, अब नहीं है. फोरियर डोमेन फैमिली में अब जो ओसीटीज़ आ रही हैं, एक स्पेक्ट्रल फोरियर डोमेन ओसीटी है, एक स्वेप्ट सोर्स ओसीटी है, और एक एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी है. How to decide which OCT is the best? Two major key points. Number one, OCT should give good resolution. And number two, the normative database. Actually, the problem is this. Most of the OCTs have the normative database of up to 18 years or 16 years. Normative database is the terminology that we collect the data from healthy eyes of different age groups, and then we compare that data of healthy eyes with the data of the patient's eye being monitored. And then OCT gives the color coding, and doctors interpret it that either patient's retina is having problem or not. So this normative database range should be larger. If any OCT which is having smaller range, then the user will have to compromise of the results. For example, if you buy the OCT, of any brand, and it has the limitation that it has the normative database up to 18 years old or 16 years old, population of any geographic area, either Asia or whatever the geographic region is.